Good morning to all of the students. Yesterday we are discussing about the chapter number 5, inside the atoms. Now, yesterday we discussed about the atomic structure, nucleus, proton, neutron, and extranuclear part, and the electron. Today we will discuss about the distribution of the electrons, how the electron has been distributed. किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग वो देखेंगे. तो now distribution of the electron has been did by the Bohr atomic model, and it is in the stable cell. Cell means how distribution of the different cells are there. There are different cells means K cell, L cell, M cell, N cell. Now in every cell you will observe there are number of the electrons are there. तो ये लोग just see. So these cells have a definite energy. They are telling the Bohr atomic models are there, and this cell have a definite energy. As I told you, in definite energy means in every cell the number of the electrons are there, limited number of the electrons are there. The nearest cells, बोलते ना जो सबसे पहले cell आता है, the cell nearest to the nucleus is called the first cell. जो nucleus के पहले whatever the we can say the near to the nucleus cell are coming, that is the first cell, and then the another one that is second cell, then in the third cell. The first cell we are telling as a K cell. The first cell is in a K cell. So now the symbol of this cell we are telling as an N. But then the symbol of this cell, the next cell is the second, that like first cell. जो first cell जो होता है न्यूक्लियस के नियर में, हाँ जो न्यूक्लियस के होता है, जो न्यूक्लियर के नियर में एकदम जो सब फर्स्ट सेल आता है, जो एक न्यूक्लियस के नियर में जो पहला सेल आता है वो फर्स्ट सेल होता है. देन इट इज़ अ सेकेंड सेल. नाउ that they are giving a definite, बोलते हैं ना, the symbol is there. This symbol they are denoting as an N. They are telling as an N. This N is an ordinary number. ये जो N होता है ordinary number. Ordinary number means N equal to 1, 2, 3, 4 like this way. So now cells are referred to the K element cell. जो cell, whatever these cells are there, we are referring as an K cell, L cell, M cell, N cell. The K as an N equal to 1, L as an N equal to 2, M as an N equal to 3, N as an equal to 4. Like this way there are different cells are there. But we are only discussing about the K element to our study. So look, the formula is there as an 2n square. The formula is like an 2n square. So the magnitude of n increases means first in the K only 1 will be there, in the L 2 will be there, in the M 3 will be there, in the N 4 will be there. So the given as a simple an example, complete the table. We have to complete this table as an activity type. So look, the given as an K n equal to 1, then formula is 2n square, that is 2 into 1 square, it will be 2. Then L, it is 2, so 2 into 2 square, it will be 8. Then M, it is 3, 2 into 3 square, that is 18. Then N, it is 4, 2 into 4 square equal to 32. So like this way in the formula type, 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square, 2 into 4 square. So number of electron in the first K cell is in a 2, L cell is in a 8, M cell is in a 18, and N cell is in a 32. So in every cell there is a definite number of the electrons. बोलते हैं ना हर सेल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रहता है. इन एवरी सेल देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इन द के दे आर टेलिंग इज एन 2, इन द एल एज एन 8, इन द एम एज एन 18, एंड इन द एन इट इज 32. तो राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल दे आर टेलिंग इज एन के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. So as I told you, in the K 2 is there, L is how much 8, and M is 18, and then N is in a 32. Now how they are telling electronic configuration are there. Electronic configuration as I told 2, 8, 18 and 32 in the electrons are there. This is the K element. This is the maximum capacity of the cell. बोलते ना K element की maximum capacity कितनी है, 2 है, 8 है, 18 and 32 is there. This is the maximum capacity. Now the electron distribution are there in the cell wise. Electron distribution is the cell wise. In the first cell only 2 will be there, in the second cell 8 will be there, in the third cell 18 will be there, in the fourth cell 32 will be there. But we are only discussing only 2, 8, 8, 2, 8, 8 and like this way. 2 first in the cell 2 will be there, then 8 will be there. If 18 is not coming, then you have to write only the 8. अगर 18 नहीं पॉसिबल होता है तो अपने को 80 लिखना है, इतना याद रखना.
तो now the cell wide distributions of the electron in an atom is called as an atom electronic configuration, like this way. How we distributed 2, 8, 18, 32. This we are telling as an electronic configuration. This is a cell wide distribution, K, L, M and type. Like this way, this is an K, L, M and distribution of the cell are there. This we are telling as an electronic configurations. So now in each electron definite energy are there. Definite energy means 2 is there first cell energy, then 8 is there in the second cell energy, like this way. तो the K is the lowest one. हाँ, जो तो K होता है वो सबसे lowest वाले में आता है. Then after K the number of the increasing, we can say the number of the electron are increasing subsequently, means first 2 will be there, then 8 will be there. ऐसा number of the cell क्या हो जाता है, इनके number of the electron ऐसे increase होते जाते हैं. Now the electron of an element in such that energy is of an all element together is maximum possibles. Means here they are telling whatever the electronic configuration are there. जो electronic configuration रहता है ना हर cell की energy का, वो बढ़ते जाता है. The maximum possibles are there. Maximum possibility means first 2 will be there, after 2 8 will be there. Maximum time 8 will come in the third cell. If 18 is not there, then we have to write 8. Remember, if 32 is not coming, then we have to write 18. और 32 के बाद अगर 18 भी नहीं होता तो अपने को 8 लिखना है, और अगर 8 भी नहीं होता तो 8 से कम लिखना है, इतना याद रखना. तो मगर फर्स्ट सेल में हमारा हर बार 2 ही रहेगा. इन एवरी टाइम द फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 विल बी देयर, एंड देन इन द सेकेंड 8 विल बी देयर, इन द थर्ड 18 विल बी देयर. इफ 18 इज नॉट कमिंग, देन वी हैव टू राइट द 8. तो इलेक्ट्रॉन गेट अ प्लेस इन द अकॉर्डेंस विद द मैक्सिमम कैपेसिटी. जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी रहती है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के पे रहती है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो नाउ वी विल सी एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट सी 3 रो दे गिवन, हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1. तो इलेक्ट्रॉन 2 विल कम इन द 1 विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द 2. के सेल में आएगा, क्योंकि के सेल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही आते हैं. ओनली 2 विल कम. So that 2 consists of the 1, to be written 1. Element does not have anything, so electronic configuration will be 1. Now in the case of the helium is 2, so 2 will come in the K cell only. So first 2 will be written here. Element does not have anything, so electronic configuration 2 will be there. Now lithium consists of 3. According to K, 2 will come. Now 3 is there, so 3 minus 2, how much it will be there? 1. तो 1 किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा. हाँ, 1 किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक करने के टाइम पे पहले मुझे 2 ब्रेक करना है, 3 का 2 ब्रेक करना है. 2 के बाद बोलते ना 3 में से 2 गया तो मेरा 1 बचता है, तो 1 मेरा L में आ जाएगा, बिकॉज इन द L 8 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. MnN डज नॉट हैव. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ वी रिटन 2, 1. नाउ इन द केस ऑफ कार्बन 6 इज देयर, बट फर्स्ट वी हैव टू राइट 2 अकॉर्डिंग टू K cell. Now 6 minus 2, 4 will be there. तो 4 will come in the category of the L only. 4 किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा. तो here 2, 4 we will write. Now neon, nitrogen is 7 is there. हाँ, nitrogen 7. तो first according to rule 2 will write. हाँ, according to rule K, the cell will consist of 2. Now according to 7 minus 2, 5 will come in the L, because consist of according to 8, in L 8 electron are there, so 5 will come easily. So here we will write 2, 5. In the case of oxygen you will see 8 is there, so first 2 will be there. After writing 2, again 6 electron will be remaining, because 8 minus 2, 6 will be there here. So 6 will come in the category of the 8 only. 6 will come in the category of the 8 only. So here 2, 6. Now in the case of the fluorine, F is there, 9 is there. So first we will write 2. Now after 2, 7 is remaining, so 7 will come in the case of the L cell. So that is 2, 2, 7. Now in the case of nitrogen is 10 is that, so 2, 8. 2, 8, to 2, 8. Now sodium, look, sodium is 11, so first 2 will come. After 2, 11 is, we can say 9 is remaining, but L will consist of only 8 cell, तो हम लोग 8 बोलते हैं ना, L के अंदर 8 लिखेंगे. अब 2, 8, 10 होता है,
अब 1 बच रहा है, तो 1 कहाँ पे जाएगा, मेरा M सेल में जाएगा, क्योंकि M के अंदर 18 आता है. तो वी विल राइट M इन द 1. तो नाउ हाउ विल राइट 2, 8 and 1. 2, 8 and 1. रिमेंबर L ओनली कंसिस्ट ऑफ 8. बोलते ना 9 मत लिख देना पूरा सोडियम के अंदर, क्योंकि L मेरा सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. तो पहले K मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. फर्स्ट द K विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, देन L विल टेक 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट 1 विल रिमेन. तो 1 विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द M. तो दैट इज 2, 8, 1. नाउ क्लोरीन इज 17. क्लोरीन कितना है, 17 है. तो 17 हाउ इट विल बी देयर, फर्स्ट 2 विल बी देयर, after 8 will be there, 2 and 8, 10 will be there. Now 7 electron is there, so 7 will come easily in the place of the 18. 7 will come in the place of the 18 easily. So here 2, 8 and 7. Now look as an argon place. आर्गन में कैसा आएगा ये, फर्स्ट 2 आता है, then 8 आता है, 2 and 8, 10, and then again 8 will be there. Again 8 will be there. So here we will write as an 8. So here 2, 8 and 8. Now bromine case, see bromine, first 2 will be there, then 8 will be there. कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है. अब कितना बच रहा है, nearly 10, means 25 is remaining. तो first 18 will consist, 2, 8, 18. कितना हुआ, 2, 8, 18 कितना होता है, 28. एंड लास्ट 7, 32 किस में आ जाएगा सर, 32 7 के अंदर इजीली आ जाएगा. तो ये 2, 8, 18 एंड 7 लाइक दिस वे. तो रिमेंबर पहला सेल बोलते हैं ना, ऑलवेज द K विल टेक ओनली 2, L will only take the 8, and M will take the 18, and N will take the 32. N will take the 32. रिमेंबर अगर N के अंदर 18 नहीं आता है तो 18 की जगह पे हम लोग we can say in the case of the M 18 is not coming, then we will write as an 8. Yeah, remember. So 35 is there. So in the case of 35 we written 2 first, and then we written 8, that is 2, 8, 10. Then 25 was remaining, so first we written 18. According to M 18 can come, and then last 7 is there, that is 2, 8, 18 and 7. So like this way the distribution of the electron they given. The distribution of the electron given. So they given an explanation of the sodium, that is 2, 8 and 1, that is 11. So first K will take as an 2, L will take as an 8, M will take as an 18. But 18 means in the case of sodium we have seen 1 was there. सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था. तो फर्स्ट 2 आया, देन 8 आया, फिर 1 आया. तो दैट लाइक दिस वे, दैट इज 11 वाज देयर. तो फर्स्ट K सेल कंसिस्ट ऑफ 2, L cell consist of the 8, and then M cell consist of the 1. So this was the electronic configuration, distribution of the electronic configurations. If you will see as an argon case, in the argon case 18 was there, 2, 8 and 8. The first 2 consist of the K, then 8 consist of the L, then M consist of the 8 again. M consists of the 8. But in the case of the bromine, what you will observe, 35. So first we written 2 in the case of the K, then 8 in consist of the L, and then 18 we written in the case of the M, and then last we written as an 7. Because 2 and 8 10, 10 and 8 18 27, 20 28, and 28 plus 7 32. 28 plus 7, sorry, it is the how much, 5 and 7, 28 and 7, it is 35. Like this way we distribute it. Now valency and electronic configuration. What is valency? Valency is the outermost electron, you will observe. So we have seen this chapter, the valency the number of the chemical bond of an atoms. जो chemical bond होता है ना atoms का, वो valency होता है. तो valency of an element may remain constant. Valency always remain constant. Remember either 2 or it will be 8. Valency remember. तो valency में क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसा सब चीज़ें होती है. Valency में से 2, 8 something or 1, 2, 3, all this are category of the valency. Now first look, we have seen this in a K, L, M and cell. तो first hydrogen was 1. तो द फर्स्ट K सेल वी ड्रॉटेड, बोलते ना जो पहला K था हम लोग ने ड्रॉ किया, तो K के हिसाब से हाइड्रोजन का 1 आया, हीलियम का 2 आया. बट इन द केस ऑफ कार्बन जस्ट सी 6 वॉज देयर, तो फर्स्ट वी ड्रॉन 2. सर्कल में क्या आया, पहले देखो 2 आया, एंड देन 4 वॉज देयर,
Because 2 and 4 6 was there. Now in the case of neon, just look, they written as in a 10. So first 2 written, 2 drawn, 2 dot was there, then 8 dot was there. But in the case of sodium, first 2 dot and then 8 dot, then 1 dot. That is first circle जो है वो K का है, second circle L का है और third circle M का है. To use the molecular formula of the hydrogen to determine the valency, we have to determine the valency, how much valency will be there, hydrogen, chlorine, sodium, nitrogen, ये सब की valency अपने को find out करनी है. तो what are the symbols used for the cells which accommodate the electron in the various atom? Which are the symbols we have seen? That is in the according to the cell K element cell was there. What is the symbols in the ordinary number of the innermost cells? Symbols क्या था उसका n था and ordinary number was the 1 2 3. Write symbol of the electron distributed in the cells of fluorine. What kind of the symbols was there? Fluorine F है और उसमें outermost electronic configuration कैसा है इसका? Fluorine that above just see 2 and 7. What is the outermost cell of the sodium? Outermost cell sodium का कितना था? 1 था outermost cell में, because sodium में कितना आ रहा था? 2 8 1 आ रहा था, तो outermost cell में 1 आ रहा है. और in the case of the fluorine you will observe outermost cell was 7 because तो fluorine कितना था? 9 था, 9 के अंदर 2 और 7 आ रहा है, तो outermost cell में 7 आ जाएगा. The outermost cell of the hydrogen you will see only a 1. तो this was the concept they are telling. तो whatever जो outermost cell आता है ना, जो whatever the outermost cell are coming, this outermost cell we are telling as a valency. So the concept regarding valency of an outer chemical elements, chemical bond in the compound get the classified according to electronic configuration. Whatever this kind of the concept are there. So the chemical bond was there. जो chemical bond रहता है ना वो valency से combine होता है, electronic configurations. तो atom from the chemical bond by using the electron in the outermost cells. जो एटम होता है ना वो आउटरमोस्ट सेल से, जो आउटरमोस्ट सेल का बोलता है ना आउट होता है, या तो कंबाइन हो जाएगा किसी के साथ या तो किसी से जॉइंट हो जाएगा. बोलता है ना कंबाइन होगा या तो जॉइंट होगा या किसी से ले लेगा वो. द आउटरमोस्ट सेल दे आर टेलिंग ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड एज एन वैलेंस सेल. जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसको वैलेंस सेल. इन द केस ऑफ जस्ट लुक हियर वी हैव सीन कार्बन 2 and 4, द 4 वाज द आउटरमोस्ट सेल. नाइट्रोजन 2 and 7, 2 and 5, तो 5 तो आउटर मोस्ट सेल था, बट वैलेंसी के हिसाब से वो 3 हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी ऑलमोस्ट इट विल बी 2 1 2 3. द एलिमेंट यू विल ऑब्जर्व आर केमिकली इनर्ट. जो इनर्ट गैसेस के एलिमेंट रहते हैं ना वो हर बार ज़ीरो ही रहने वाली, वैलेंसी उसकी ज़ीरो ही रहने वाली है. जो इनर्ट गैसेस की जो है तो उसकी वैलेंसी अक्सर क्या रहने वाली है? ज़ीरो. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इट विल बी 1 2 3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट विल बी ऑलवेज 1 2 3. तो वैलेंसी ऑफ एन एटम इज रिलीज टू दी नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो वैलेंसी होती है वही नंबर ऑफ दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में आता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इट विल बी इन द आउटर मोस्ट सेल्स. लेट अस फर्स्ट लुक द एलिमेंट ऑफ द हीलियम एंड नियॉन. हीलियम इज 2 एंड नियॉन इज 10. तो 10 इज व्हाट? 2 and 8 बोथ आर कंप्लीट. 2 और 8 रहेगा तो किसी को देने वाला नहीं है. They are always in the stable one. They are always in the stable one. Both these gases do not combine with anyone. बोलता ना ये जो 2 रहेगा 8 रहेगा किसी से combine नहीं होने वाला है. This element chemically inert. तो whatever the helium, neon, argon, xenon, krypton, this all are we can say inert gases are there. ये inert gases होते हैं, ये zero group वाले होते हैं. It means that the valency is 0. In the case of the inert gases, the valency always will be 0. Remember. Now helium atom contains 2 electrons. जो helium atom के अंदर क्या होता है? 2 electrons होता है. The 2 electrons are coming in the K cell. The 2 electrons are coming in the K cell. Remember. Now the capacity of this electron that we are telling is 2n square, because 2 into 1 is square 2. That is K cell. The K cell 2 is there, तो this 2 we are telling as a duplet. ये जो 2 होता है ना उसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं. The 2 is in a outermost cell. The 2 cannot give to anyone. Remember, in the case of the helium, the electronic configuration of the inert gas neon in the case of you will observe that is 10, that is 2 and 8. It is 2 and 8. So 2 we know that as a duplet. Now in the case of the L, that is 8 consists.
नियॉन में कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, 2 और 8. तो 8 वी आर टेलिंग एज एन ऑक्टेट. हाँ, द 8 वी आर टेलिंग एज एन ऑक्टेट. Remember. We will continue this lecture next time.